वेलकम टू आशा देवर्स किचन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं 3 प्रकार के सैंडविच। तो सबसे पहला हमारा सैंडविच होगा कांदा, टमाटर और कुछ प्रोसेस चीज़ हम यूज़ करेंगे। दूसरा वाला एकदम सिंपल होगा जिसमें हम बनाएंगे उसे काकड़ी, टमाटर और कांदे के साथ। और तीसरा वाला जो होगा वो स्टफ्ड सैंडविच होगा जिसमें हम उसे पोटैटो के साथ स्टफ करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कांदा और टमाटर का सैंडविच। तो उसके लिए हमें चाहिए चॉप ऑनियंस, प्रोसेस चीज़ ग्रेट किया हुआ है, टमाटर, कोथिमीर और थोड़ी सी हरी मिर्च, और साथ में बटर चाहिए जो हम सैंडविच के ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। पहले हम ये सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रेड में ये बटर लगा लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे इसको। बाद ये जो हमने फिलिंग्स बनाया था उसे हम ब्रेड के बीच में रख देंगे। अच्छे से इन फिलिंग्स को इसमें रख देंगे। ये पैन अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें अपना सैंडविच रख लेंगे ताकि ये अच्छे से टोस्ट हो जाए। अभी हम बनाने जा रहे हैं एकदम सिंपल वाला सैंडविच। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी ग्रीन चटनी, काकड़ी स्लाइस किए हुए, टमाटर और कांदा। सबसे पहले हम इसमें भी सेम बटर स्प्रेड लगा देंगे।
एक साइड पक जाने के बाद हमें इसे दूसरे साइड टर्न कर लिया है। सैंडविच एकदम से रेडी है, बस इसे कट करते हैं। अभी जो हमारा तीसरा सैंडविच है वो है मसाला सैंडविच। उसके लिए हमें चाहिए थोड़े से बॉइल्ड पोटैटोस, चीज़, मक्खन, कोतमीर, चॉप कांदा और बारीक कटे हुए हरी मिर्ची। पहले हम इस बटाटे को अच्छे से मसाला बना लेंगे। इसका पैन में तेल गरम कर लेंगे। जाने के बाद उसमें ये कांदा, कोतमीर और हरी मिर्च तीनों एक साथ डालें। उसके बाद ये बाकी के पोटैटोस पूरे थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से। फिर 2 से 3 मिनट तक सॉर्ट करके इसे निकाल लेना है। तो बटर पे अभी हम इस ब्रेड पे बटर लगा लेंगे एक बार। दोनों ही साइड से बटर लगाना है। बटर के ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन चटनी लगा लेंगे। पोटैटो का फिलिंग्स बनाया था जो हम ब्रेड पे लगा लेंगे। चीज़,
इसी भी सेम इसी तरह से टोस्ट कर लेंगे पैन पे।